Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And today we are doing chapter number 1, the solid state of class plus 2. And in my today's video, I am covering a very important topic of this chapter. Topic is the density of cubic unit cell and its numericals. So first of all, what is the density of any cubic unit cell? We know about density. Density is mass per unit volume of any substance. So if here we are having the cubic unit cell, so density of cubic unit cell will be equal to mass of cubic unit cell upon volume of cubic unit cell. Suppose this is equation number 1. If you will find out the mass of cubic unit cell and volume of cubic unit cell and put up that values in the formula in the equation 1, then we will get the formula of density of cubic unit cell. So firstly we will find out the volume of cubic unit cell and mass of cubic unit cell. So first is volume of cubic unit cell. We know this is cubic. Cubic means it is having a cube-like structure. And what is the volume of cube? We know volume of cube is side into side into side. It means as into as into as. So suppose as length of cubic unit cell. This is A. So volume of cubic unit cell. So volume of cubic unit cell will be as into as into as. It means that will be A cube. So this is equation number 2. So equation number 1 में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें चाहिए था वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू A क्यूब. नेक्स्ट इज मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. Second is mass of cubic unit cell. We know we have already covered the volume of cubic unit cell or volume of constant particles in case of packing efficiency. तो आपने वहां पढ़ा था the total volume occupied by particles कैसे निकाला था? It is equal to volume of one constant particle multiplied by number of constant particles. So same basis we know in a cubic unit cell constant particles are present and other spaces are empty and empty spaces have no volume. So mass of cubic unit cell will be equal to the total masses of all the constant particles. So it will be equal to total masses of all the constant particle in that cubic unit cell. अब कांस्टेंट पार्टिकल का जो टोटल मास है वो कैसे निकलेगा? बिल्कुल सेम वैसे. वहां क्या था? वॉल्यूम ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल. तो सेम वैसे यहां आएगा नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल. एंड वी नो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. पैकिंग एफिशिएंसी में आपने पढ़ा. इनटू मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल. Here we will use the mole concept. In plus 1 class, you have studied that 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 to the 23 constant particles and that is equal to molar mass. वो क्या था? molar mass के equal. So 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the 23 constituent particles of that substance. अब यहां यदि 1 mole of any element होगा then is equal to 6.022 into 10 to the 23 atoms of that element आना था. अब यहां कंपाउंड या गैस होता तो 6.022 into 10 to the 23 molecules of that substance आता. and is equal to एलिमेंट के केस में ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल एंड कंपाउंड या गैस के केस में ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल. And we know
Molar mass is a common term which is used for element as well as compound or gas. So molar mass common term है, तो यहां सिंपली हम इसे molar mass दे सकते हैं, molar mass of that substance. So यहां से क्लियर क्या हुआ, 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the 23 constant particle of that substance is equal to molar mass of that substance. तो यहां यदि हम इन्हें देखें तो इसका मतलब क्या है, 6.022 into 10 to the 23 constant particle has mass is equal to molar mass. So we can say mass of 6.022 into 10 to the 23 constant particle of any substance is equal to molar mass of that substance. मोलर मास को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिटी मेथड से. मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल क्या आएगा, मोलर मास कैपिटल एन डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the 23, and this 6.022 into 10 to the 23, this is called Avogadro number and represented by m0. So mass of one constant particle क्या होगा, m upon n0. तो यहां पर आप करेंगे mass of one constant particle m upon n0. ये हमने बताया है मास ऑफ वन कांस्टेंट पार्टिकल कैसे आया, और जो ये आया है हमारा दिस इज द मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. सो वी विल राइट द मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल is equal to Z into M upon N0. This is equation number 3. Now put values of second and third equation into the first equation. So हमारे पास क्या रिजल्ट आए थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इट इज इक्वल टू a क्यूब, दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, एंड मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल दिस इज इक्वल टू z इंटू m अपॉन n0, इट इज अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन. अब हमें करना क्या है, पुट द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल एंड मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल फॉर इक्वेशन नंबर 2 and 3 into the 1. Put values from equations 2 and 3 in equations 1. So density of cubic unit cell, this is represented by rho equal to mass of cubic unit cell Z into m upon n0 upon volume of cubic unit cell, that is a cube. So this is the formula, final formula for finding out the density of cubic unit cell. Rho is equal to Z into m upon n0 into a cube. Now some important points for numerical problems जो हमें ध्यान रखने हैं इस फार्मूला को पुट अप करने से पहले, कि हमारे स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या यूनिट्स होनी चाहिए. अब हम वो करे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. वे ना फार्मूला क्या है हमारे पास, डेंसिटी का रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n0. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. फर्स्ट पॉइंट, द यूनिट ऑफ डेंसिटी शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मिलीलीटर. कि हमारे पास यहां डेंसिटी का यूनिट जो है इट शुड बी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर मिलीलीटर. इफ इट इज इन अनदर यूनिट्स, सपोज डेंसिटी इज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
Suppose density of cubic unit cell or density of any substance is in kilogram per meter cube, then we will convert it into gram per centimeter cube. So 1 kilogram per meter cube is always equal to 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube. Then we will use this conversion factor. Second one, the Z. What is Z? It is the number of constituent particles per unit cell, or it is also called rank of cubic unit cell. We know, and it depends upon the type of cubic unit cell. So for simple cubic unit cell, मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, देन द वैल्यू ऑफ Z इज ऑलवेज 1. फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल Z इक्वल टू 2. फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग Z इक्वल टू 4. बट there are some exceptions. In case of CSCl, cesium chloride, CSBr, cesium bromide, cesium iodide, all have BCC structure. इन सब में क्या है? BCC structure है. So Z must be 2. Z होना क्या चाहिए? 2. बट हेयर Z इज टेकन एज 1. लेकिन यहां Z क्या है? 1 लेना है. दिस इज द एक्सेप्शन कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, Z वैल्यू 2 होनी चाहिए. लेकिन यहां पर सिर्फ इन तीनों के केस में सीजम क्लोराइड, सीजम ब्रोमाइड, सीजम आयोडाइड एंड ऑल द कंपाउंड्स हैविंग दिस लाइक स्ट्रक्चर इन जैसे स्ट्रक्चर में, इन दैट Z वैल्यू इज टेकन एज 1 इंस्टेड ऑफ 2. थर्ड इज third point is the unit of M. M is molar mass of any substance should be gram per mole. The unit of molar mass of any substance should be gram per mole. And we know in case of element its value is equal to atomic mass, and in case of compound or gas its value is equal to molecular mass, and in case of final compound its value is equal to formula mass. But atomic mass, molecular mass and formula mass all are having the unit A and U, and in this case value is same but the unit will be gram per mole. So molar mass का unit क्या है? ग्राम पर होना चाहिए. In case if molar mass of any cubic unit cell or any element or any substance is given in kilogram per mole, मान लीजिए मोलर मास किलोग्राम पर मोल में है, then we will firstly convert it into gram per mole, and we will, so 1 kilogram per mole equal to 1000 10 to 3 gram per mole. So हमें ये याद रखना है, this is the conversion factor, and in this way we will convert 1 kilogram per mole into 1000 gram per mole. So it will gram per mole. So 1 kilogram per mole is equal to 10 to 3 kilogram, 10 to 3 gram per mole. Next is the unit of A. A is as length. It should be centimeter. As length का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर होना चाहिए. In case it is in meter, it is in picometer. In case it is in nanometer, angstrom, then we will convert it into centimeter. So 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter, और सेंटीमीटर में करें तो 100 से मल्टीप्लाई. So 1 picometer is equal to 10 to the power minus 10 centimeter. This is first conversion factor. Same way say 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter, और सेंटीमीटर में देखिए 10 to the power minus 7 centimeter. Same way say 1 angstrom
1 एंगस्ट्रॉम है, इक्वल टू 10⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर का कन्वर्ट है 10⁻8 सेंटीमीटर. So these are some conversion factor, the unit of as length. Next is the unit of volume. Sometimes volume of cubic unit cell is given, and you know volume of cubic unit cell, this is represented by A cube. The unit of A cube should be centimeter cube or it should be milliliter. तो यहां वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए? इट शुड बी सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर. सपोज इट इज गिवन इन लीटर, वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर क्यूब. सो कन्वर्जन फैक्टर ये ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर और 10⁻³ मीटर क्यूब. सो 1 लीटर इन सब चीज के इक्वल है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मिलीलीटर और 10⁻³ मीटर क्यूब. Next is Avogadro number. The value of m0, Avogadro's number is fixed. And its value is 6.022 into 10⁻23. This is the value of Avogadro number, and these are some important points for numerical problems of density of cubic unit cell. Now, in some questions, radius of substance is found. हमारे पास रेडियस पूछा जाता है, या in some questions nearest neighbor distances has to be found out. Then how can we calculate the radius of cubic unit cell or the radius of constant particle or the nearest neighbor distance of the constant particle or nearest neighbor distance of the cubic unit cell? So next is relationship between as length, radius and nearest neighbor distance. I think this is clear. Now relationship between as length A, radius R and nearest neighbor distance D of any cubic unit cell, of any type of cubic unit cell. Suppose we are having a question of density, and in that question of density we have to find out the radius of cubic unit cell or the nearest neighbor distance of cubic unit cell. Then we know in the formula rho is equal to Z into M upon A cube into N0. There is not any term of radius, there is not any term of nearest neighbor distance. Then how we will find out the radius and nearest neighbor distance? अब हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. Firstly, we should have the as length of cubic unit cell, and secondly, we should have the type of cubic unit cell. हमें पता होना चाहिए कि cubic unit cell कौन से टाइप का है क्वेश्चन में. So first, for simple cubic unit cell, we know Z is equal to 1. In case Z given है या टाइप बता रखा है, then we know in the percentage packing efficiency expression we have studied that A is equal to 2R. A is equal to 2R. It means as length is 2 times radius. तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू A/2. और जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल d से शो करते हैं, एंड दिस इज जस्ट लाइक द डायमीटर. तो डायमीटर कैसा होता है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो इस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो d इज इक्वल टू A/2 into 2, दैट इज इक्वल टू A.
So in the simple cubic unit cell, as length is twice of radius is half of as length, and nearest neighbor distance is equal to as length of cubic unit cell. Next is for face centered cubic unit cell. मैंने बताया फेस सेंटर्ड हो या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, z equal to 4. सो वहां a हमारा कितना था 2√2r. सो r कैसे आएगा, दिस इज a by 2√2 और d कितना होगा 2 times of radius, that is a by √2. थर्ड इज फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, z equal to 2. सो a यहां कितना था 4 by √3r. So R will be equal to √3 by 4a and D is equal to √3 by 2a. So this is the relationship between as length, radius and nearest neighbor distance of any type of cubic unit cell. Now we will study one example of numerical of finding out the density of cubic unit cell or any terms present in the formula of density of cubic unit cell or radius as length nearest neighbor distance, this one. So let's have an example. Now our question is niobium crystallizes in the body centered cubic structure, and if the density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate atomic radius of niobium if its molar mass is 93 gram per mole. So हमें इस क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है किसका, नायोबियम का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि गिवन क्या है. Niobium crystallizes in the body centered cubic structure. So for BCC, we know Z is equal to 2. If the density is 8.55 gram per centimeter cube, this is density and density is represented by rho. So rho is equal to 8.55 gram per centimeter cube. Calculate atomic radius of niobium. हमें यहाँ radius find out करना है R. If its molar mass is 93 gram per mole, so m is equal to 93 gram per mole. We know the formula of density is rho is equal to z into m upon a cube into n0. आप देखिएगा rho given है, z given है, m given है, n0 पता है, a नहीं है. So a cube इधर ले जाएंगे. So a cube is equal to z into m upon rho into n0. So a cube is equal to z कितना है 2 into m 93 upon rho 8.55 6.022 into 10 to the 23. When it is solved, then the value of a comes out to be 3.31 into 10 to the minus 8 centimeter. So this is the as length. But we have to find out the radius. So this is the BCC structure. So we know for BCC structure A equal to 4 by √3r. So R will be equal to √3 by 4a. What values? √3 is 1.732 upon 4 into A is 3.31 into 10 to the minus 8 centimeter. और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारे पास 1.43 into 10 to the minus 8 centimeter. This is the radius. And in case we have to find out the nearest neighbor distance D, and then D equal to √3 by 2a. So it means 2 times of radius. तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, that will be equal to 2.86 into 10 to the minus 8 centimeter. So this is about the numerical of density of cubic unit cell, finding of atomic radius, finding of nearest neighbor distance. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.